Ux. Yes, yes. So, And who are are we in live? Manya, please share the YouTube link with the first years, all the first years, and also with Deepthi ma'am. and who all are here, start turning on your cameras, guys. Guys, I want everyone to switch on your camera. Who are in And also with Deep. We are live. Okay. and who all are here, start turning on your So, shall we allow? So, Ashrita, Asta Mehta, are you ready with your anchoring part? yeah, I'm ready. Okay, so I am admitting Bijay. So, good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Just 1 sec. Give me 1 sec for my video. No problem. Sir. See me somewhere just 1 second. I think short of light. Okay, can you see me? Yes, Sir, you are visible. Okay, perfect. Some with the light, but okay, can't help it. No problem, sir. We'll be starting in the next 2 minutes. We are waiting for the participants to join. Sure. So just give me a heads up when we are going to start, huh? मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ तो जैसे ही बोलते हैं switch on my video. Okay, sure.
So, are we good to start? Yes, you can start, sir, and ask to sir also. Yes. I'm okay. Okay, I request fine. all the participants to please be on mute. Astha? Yeah, sure, I'll take it from here. Okay. A decorated Indian naval officer, an ultramarathoner, an author, a blogger, a humorist, and whatnot. Our next speaker is full of motivation and inspiration. Good afternoon to one and all present here. I, Astha Mehta, a student of Motilal Nehru College, is immensely pleasured to be given an opportunity to address this event. On behalf of the Comrosia team, I would like to introduce our third speaker of day 3. Lieutenant Commander Bijay Nair is a retired decorated Indian naval officer and a war veteran. Sir has been facilitated with Operation Vijay War Medal and Operation Parakram Medal. In 2021, Ministry of Youth Affairs and Sports appointed him as the Fit India Ambassador. Sir wrote various books, one of which is the best-selling book of inspirational stories on running, #They Inspire, which sold 5,000 plus copies. Sir is an author of a book titled Bhag, Bijaya's Hilarious Anecdotes, Gags, and Humor, which released in November 2020. In 2021, Sir received the Best Author Award at Indian Authors Awards and Conference. Living by the mantra, I run, therefore I am, running has given him a new lease of life. Going by the fact knowledge is power, Sir believes in sharing knowledge and wisdom through his blogs and motivational speeches. Currently, Sir is serving as the Associate Vice President and heading compliance, quality, and audits for one of the national importance prestigious compliance body. We welcome you, Sir. With this, I would like to welcome Ms. Shrishti Jain ma'am to give her greetings to our guest speaker, Bijay Nair, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I, Srishti Jain, on behalf of Department of Commerce, Motilal Nehru College, bid a very warm welcome to Lieutenant Commander Bijay Nair, sir. We all feel lucky that you took out some valuable time to be a part of this event organized by Comrosia. Sir is a complete package of talent, as already been told by Astha. I am sure that it's a golden opportunity for the students to listen to you and get motivated from your life experiences. Welcome, sir. Looking forward for an enriching session. Thank you. Yeah. So let me know when I'm to start, so I can start then. Yeah. Yeah, so you can take the stage from here. Okay, fine. Yeah. So first of all, thanks Asta for a wonderful introduction, and thanks Srishti for inviting and doing the honors, and thanks to Samir for pursuing the for this particular talk. And I always feel lucky to be amongst the youngsters, because फिर ऐसे लगता है ना कि आप भी यंग हो करके, नहीं तो सडनली रियलाइज होता है oh bloody you're 46, so stay away from young people, but when I am there with you all, so you also feel young. So age is just a number. This is what I believe, and 46 is just a beginning of youth. So that's what I believe. So when I was 23, I believe 23 was the beginning of youth, and koi baat nahi, double the age. So that's how.
So yes, so first of all, thanks to Cambrosia team for inviting. And as I see the speakers conclave, there are eminent speakers, and I feel lucky to be amongst that. And more than anything, I feel lucky that, as I said earlier, so I reiterate that I feel lucky to be amongst all of you, and you have taken your time out. That's what important. And I believe you are the youth. You are a very focused generation of youth. Because why I say this, because when the pandemic happened in 2020, prior to that I was never on Instagram much, and on the social media, I was busy with my life, running, or with my corporate life after my daughter, so many things. But when I connected, and my hard belief and the strong belief what youth of this generation is good for nothing. That was my strong belief when I saw people on TikTok, and when I saw people on Instagram reels, making reels and wheeling away that was my belief in 2020. But the belief changed. Trust me, everything changed. Change is a constant thing which we say. Change is dynamic. And when I met people like you, when I met connected to people, the youth of this country, the other section of youth, I started believing in, overall again, that this country is in very, very decent hands. And this country is, going to soar with you people at the helm. And you are going to be the generation which is going to take this country ahead. So with this, my talk would be in both in Hindi and English. I would mix the language because that's what I prefer. And yes, at some time there would be Fauji flavor in it. So please excuse me for that. And I can't help it because that's what I have been trained for, and that's what in my blood. So something which is in your blood, usko aap nikal nahi sakte ho, So I won't pretend to you कि मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ. मैं बिल्कुल शरीफ बंदा नहीं हूँ. So yes, to start with, so my journey, my story is a story of belief. मेरी जो कहानी है सपनों की कहानी है. मेरी जो कहानी है, ये कहानी दर्शाती है कि सपनों में विश्वास करना चाहिए. My Hindi may not be as good as you guys because आप लोग दिल्ली के हो, you speak good Hindi. I am a Mumbaiite, मैं बम्बईया हिंदी बोलता हूँ. So मेरी हिंदी में टपोरी फ्लेवर होगी तो प्लीज क्षमा कर देना पहले से. नहीं क्षमा किए तो भी चलता है. That doesn't matter, but that's how I am, like. So I was born and brought up in Mumbai. I'm a Malayali, Keralite by birth, but yes, like many of us, I was brought up and born and brought up in the Cosmo city of Mumbai, in the metro. And life was challenging because I was born in 1976, and primarily I've grown up in the 80s and 90s. That's what my growth stage. So let me tell you very frankly, my first choice, everyone has an ambition. अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो जब आप go back to your childhood, आप जब 5 साल 6 साल 7 साल आपके घर पे कोई आपके कजिन्स रिलेटिव्स आते हैं तो पूछते हैं ना बेटा क्या बनोगे करके, तो आप लोग सब लोग सोचो, ऑल ऑफ यू वुड हैव डन दैट. ये नहीं मैं टीचर बनूंगी, पायलट, एयर हॉस्टेस, और कोई बोलेगा फौजी, कोई बोलेगा ये डॉक्टर, इंजीनियर. व्हेन समबडी आस्क्ड मी कि व्हाट विल यू बी, तो मेरे पहला चॉइस वाज टू बी अ गैंगस्टर. आई वांटेड टू बी अ गैंगस्टर. इट्स वेरी सुन के बड़ा अजीब लगता है बट फैक्ट था. एंड सेकंड एम्बिशन वाज टू बी अ मोटरमैन. ट्रेन का जो ड्राइवर होता है ना, मुझे ट्रेन बहुत पसंद था. तो ऐसे था. फौजी तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं था पहले, इनिशियल डेज. Yeah, because I was born in Mumbai at that time, at point of time, जहाँ gang wars used to be the thing. Movies like Shiva, Satya, that was what you used to see पूरा. तो glamour, ऐसे लगता था glamorous life है. Till the time I happened to see Fauji. Fauji एक serial आती थी शाहरुख खान की, and that used to show the life of army. Generally army, air force or navy नहीं, but army. Focus was on army. जब मैंने वो देखा पहली बार, या जब मुझे होशो हवास में जब देखा, तब इट वाज नॉट फॉर शाहरुख खान वाज अ स्मॉल टाइम गाय इन दैट, लाइक ठीक है. अभी अगर व्हेन यू गो टू यूट्यूब एंड सी फौजी, तो अभी व्हेन आई सी ये तो विद बिग हेयर एंड ऑल, ये फौजी बिल्कुल नहीं लगता है. बट देन द वेरी फैक्ट दैट इट इनकलकेटेड अ फेवर ऑफ पेट्रियोटिज्म इन ऑल ऑफ अस. एंड इफ यू सी शेरशाह देखिए आपने, कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी जो शेरशाह,
I'm sure all of you would have. So Vikram Batra sir is 6 months senior to me. So we are of that same generation, you know, of officers. तो शेरशाह मूवी में एक छोटा सा पार्ट है कि when they say why Vikram Batra was motivated to join the armed forces, तो चुपके से अपने घर पे उसका जब बचपन दिखाता तो टीवी में देखता, तो एक डायनोरा की टीवी है पुराने जमाने की, आज के जैसा नहीं, एलईडी एंड एलसीडी, तभी ऐसे बड़ा सा टीवी होता था। टीवी मतलब इतना बड़ा होता था कि पता है आधा तो घर स्पेस टीवी के लिए चला जाता घर में, यू नो, दैट वाज दैट बिग वाज। तो उसमें आप देखोगे बचपन का कैप्टन विक्रम बत्रा इज सीइंग अ सीरियल कॉल्ड परमवीर चक्र, है ना, खिड़की से, एंड दैट वाज ऑल ऑफ अस, हमारी कहानी वही है। तो हम लोग भी परमवीर चक्र देखते थे एंड इट मोटिवेटेड मी टू जॉइन द आर्मी, यू नो। द आर्मी वाज इवेंचुअली द फर्स्ट थिंग व्हिच केम। नेवी दूर दूर तक पता नहीं था हमको क्या होता है। So yes, so my life was tough. My childhood was tough. I was not born with a silver spoon and you know, बोलते हैं ना, तो मैं मुंबई में बहुत छोटी सी जगह से हूँ, एक सबब है मुंबई का, और जो हमारा बचपन है बहुत टफ इससे गया, बिकॉज मेरा जो घर था ना, आई डोंट नो, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई मोस्ट ऑफ यू, मुंबई में देयर आर यू नो छोटे छोटे घर होते हैं, इट्स कॉल्ड चॉल्स, छोटे छोटे। तो हमारा जो घर था, कैन यू बिलीव, इट वाज ओनली 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। टुडे माय किचन इज 100 स्क्वायर फीट, यू नो, दैट वाज द डिफरेंस। So but then the fact was we all were very happy. We were 3 siblings, parents, father, mother, and we were very happy, you know, things. So the lesson is that आप जितने भी हो, wherever you are, you know, be content, be happy, at the same dream, at the same time dream. सपने देखो, सपने देखो, सपने देखने का कोई टैक्स नहीं लगता, बट हाँ, सपने जब देखते हो ना, तो टाइमलाइन के साथ देखो, then it becomes a goal. नहीं तो क्या, सपने सोए उठे सब कुछ evaporates, everything goes, then it becomes a dream, you know. Dream with a timeline is called goal, right? So that was my so बचपन वैसे। तो मेरी जो स्कूल थी, you know, I am not from a convent, I am not from a military school, I am not from a you know, सैनिक स्कूल और रिमकोलियन, कुछ नहीं। मैं एक छोटे से स्कूल से हूँ, बहुत छोटा स्कूल, जहाँ गिनकर 10वीं की एक कक्षा होती थी या 9वीं के 2 डिवीजन होते थे। इट वाज मैनेज्ड बाय अ ट्रस्ट रन बाय मलयाली ट्रस्ट, राइट? सो या, सो नथिंग फैंसी अबाउट इट। और हद ये थी ना कि इंग्लिश मीडियम, जब आप अंग्रेजी बोलते हो वहां पर, यू नो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब हम इंग्लिश बोलते थे, सब ताली बजाते, अरे ये अंग्रेज आ गया करके, यू नो, सी is damn speaking in English, you know, that was the thing. तो ऐसे मस्ती मस्ती में तो बचपन वैसे गए till the time 8th standard happened. 8th standard was a very life changing moment for me. मैं बॉम्बे में जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ एक नेवल कैंट है बाजू में, 2 किलोमीटर्स की दूरी पर, एंड ओनली ग्राउंड बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड वाज इन द नेवल कैंट के अंदर। अब खेलना तो है, हम तो दूर दूर तक सिविलियन है। अगर किसी को कोई शक या शंका है कि सर फौजी फैमिली से है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जनरेशन में मैं पहला फौजी हूँ, मेरे बाद भी पता नहीं अभी कोई होगा। होपफुली माय डॉटर विल गो टू, यू नो, शी इज ट्राइंग फॉर एनडीए और एएफएमसी, सो होपफुली नेक्स्ट जनरेशन में भी। बट इसके पहले ना कोई था, ना आगे किसी ने अभी तक सोचा है, यू नो, कजिन्स में या वहीं पे। सो मैं नेवल कैंट के पास रहता था, तो क्रिकेट खेलने हम नेवल कैंट के अंदर जाते थे ट्रेस पास करके, हमें पता था कि कहाँ से अंदर जा सकते हैं। It was a civilian camp, so it was not that well protected compared to the, you know, the actual so naval civilian camp. तो हम लोग अंदर से दीवार फांद के, दीवार में कहीं छेद था या कोई एक गटर होता था, नाला, सूखा नाला, नॉट दैट कचरे वाला, उसके अंदर से हम घुस के जाते थे और ग्राउंड पे खेलते थे, यू नो। एंड वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे बैड लक और गुड लक और लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो भी कहो, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड पे, तो नेवल ऑफिसर्स का राउंड आ गया वहां पर गाड़ी लेके जिप्सी में, एंड दे कॉट ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस वेर मेड टू स्टैंड इन लाइन। तो बाकी सब भाग गए, जो 18, 15, 20 बच्चे जो खेल रहे थे, दे ऑल रैन अवे। एंड क्वाइट अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, वॉट एवर यू कॉल नाउ, the 3 or 4 of us got caught.
और ये बुरा हाल हुआ कि पनिशमेंट, मुर्गा सुने हो ना, मुर्गा बने हो कभी लाइफ में, तो मुर्गा बनाए, दे रनिंग कराए यहाँ वहाँ. And see, for me, first time I'm seeing a naval uniform, and trust me, naval uniform looks beautiful, you know. So मैं first time जब देख के, वो बोलता है ना, पहला प्यार लाए जीवन में बार, सुने हो एडवर्टाइजमेंट. So that first sight, first love happened, you know. Then वो आर्मी वाली जो फीलिंग थी ओजी, वो somehow it went backside, you know, पीछे थोड़ा रह गया. And Navy became my whole and soul, कि ना अब ड्रीम है तो नेवी जाएंगे. Now the problem was किसके पास जाए, who's there to guide. Now today there are Instagram, YouTube channel. हमारे जमाने में वो नहीं था. So today if you want to join Navy, you Google it, कैसे जाना है, there would be so many things, right? But हमारे टाइम में वो नहीं था. So what happened was, एक मेरा जो स्कूल फ्रेंड था उसका मामा was in Navy. So I was not knowing whether he's a sailor, officer, कुछ नहीं पता था. He was in Navy and he had come on chutti. So now luck is very, very important. You know, hard work is one thing, but luck also should be in your favor. है ना, हार्ड वर्क हम सब करते हैं. You know, जब होता है ना कि जब लॉटरी निकालते हैं तो करोड़ों लोग निकालते हैं, लक एक ही आदमी को फेवर करता है. तो सिमिलर वे, luck favored us. That particular uncle turned out to be a naval officer. You know, and his knowledge, like आप लोग अभी जैसे मेरे से बात कर रहे हो, तो हम तभी उनसे बात की कि सर नेवी में जाना है तो कैसे जाए. एंड देन पहले तो बहुत गाली दी, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में स्कूल बंक करके गए थे हम, बैग वेग कहीं छुपा के, यूनिफॉर्म टाई पॉकेट में डाल के. एंड दैट वाज सो ड्यूरिंग आवर टाइम, स्कूल बंक करना वाज अ क्राइम. स्कूल बंक करना वाज अ क्राइम. आज के आप लोग के जनरेशन में इट इज अ कूल फैक्टर. लाइक माय डॉटर, अरे स्कूल बंक नहीं किया तो व्हाट हैव यू लिव्ड, कूल फैक्टर कहाँ गया. सो इट्स कूल टू बंक स्कूल, दिस व्हाट माय डॉटर से चलता है यार टाइप्स ना. ऐसे हमारे टाइम वैसे नहीं था, तो वो पेरेंट्स पकड़ लेते, धोते थे एकदम पकड़ के. स्पेशली अभी के जो फादर्स और मदर्स है, आप लोग के जो डैडी मम्मी, you know, like my generation of parents are much friendly. Our parenting is totally different compared to our parents. Our parents were like, oh, एकदम स्ट्रिक्ट, हिटलर टाइप होते थे, यू नो, आंखों से आंखें मिला नहीं सकते, और एक ही भाषा समझते थे कि बच्चा 100 में से अगर 35 नहीं आया, पास नहीं हुए, 34 आया तो मतलब धो दो उसको, पकड़ के इतना मारो कि सब सही हो जाता है, यू नो. और अभी के जनरेशन में अगर गलती से भी छू लिया बच्चों को या टीचर्स ने मार दिया तो हंगामा हो जाता है, यू नो. हम पेरेंट्स ही भागते हैं पहले, हाउ कैन यू बीट माय किड एंड ऑल. तो आवर जनरेशन इट वाज टोटली डिफरेंट. लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, एक कहावत है, तो हमारे जनरेशन की कहावत है कि मारो दे मारो करके, यू नो. एंड दैट्स हाउ वी आर, दैट्स हाउ वी ग्रू अप. And then, you know, bunk करके मिले उनसे, and then he told us about NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाते हैं करके. That was the first time पता चला. मेरे इर्द गिर्द या आजू बाजू में किसी को कुछ नहीं पता NDA क्या होता है करके, you know, what is NDA. So I came to know, then I did some research, कोई बुक स्टॉल से जाके बुक लिया, and then I appeared for my NDA exam. So now NDA exams are one of the toughest exams, you know. जैसे IIT, like IIT is the toughest India में, and it has a तरीका होता है, you know, technical है. उसके बाद अगर कोई exams आप देखो तो it is like NDA exams, defense force के लिए. Why? Because it is not only about written exams. There are 5 days of interview, SSB interview. India का only interview which goes on for 5 days. To see your complete personality, to see your physicals, to see your psychological, to see your thoughts, to see your actions. इसलिए 5 दिन होता है. Then 5 days का medical होता है. And then merit list लगती है all India. So 4 steps, you know. And it is so 10 lakh से finally 300 बच्चे select होते हैं. 10 लाख बच्चे appear करेंगे, 300 select होंगे, you know. So when I went to appear for written exam, so written exam I was pretty confident. See, भगवान ने एक बहुत अच्छा दिया, तब भी कॉन्फिडेंट था, आज भी कॉन्फिडेंट हूँ, यू नो. लाइक दो आई वाज फ्रॉम अ वेरी सब्टल बैकग्राउंड, या दैट नेवर स्टॉप मी फ्रॉम ड्रीमिंग. सो आई वाज पिच्ड अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स इन इंडिया फॉर एनडीए. एनडीए के लिए सब तोप तलवार आते हैं वहां पर, यू नो, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, ऑल सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड. एंड रिटन एग्जाम आई क्लियर्ड. एंड रिटन एग्जाम क्लियर्ड होने के बाद 10 लाख में से 1 लाख की आगे जाते हैं. Rest everyone gets out. So now
now was 1,03,000 seat. So SSB interview. जब SSB interview गए, माँ कसम, like I saw people from all background, जो फौजी background से, some defense के बच्चे, like they were dressed up so smartly, tie पहने, ये पहने, scarf पहने, and यहाँ हम खड़े सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा, एक white shirt, एक black pant, एक blue pant, बदल के पहन रहे 5 दिन, because that was it. That was the condition which I was in. So when I went there, my English was pathetic. My English was absolutely pathetic. And that is what life has done. So I always believe, जो चीज में आप वीक हो ना, उसको साला इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि जिंदगी फिर वो वीकनेस ना रहे. So today I'm the author of 7 English books, 7 English books. At some point of time, I was not even able to construct an English sentence properly. So I will tell you a small story. So what happened is कि जब आप 10th standard से junior college में जाते हो, I don't know if आपके time ये होता है, तो हमारे time 10th standard के बाद, if your school don't have 11th and 12th, you go to other junior college. तो हमने भी school हमारी छोटी थी, तो 11th 12th 10th में mark decent था, तो I went to school, a junior college. And now वो junior college ऐसे था, वहाँ ना हर तरह के बच्चे आते हैं, smart, convent, educated, all those handsome and beautiful type. They only speak English and English में, तो पहले तो अपने को sentence catch करने में difficult हो रहे थे, ये बोलते क्या बोल रहे types, so वैसे and so many things happened. तो हम लोग भी confident थे, हिंदी बोलते थे, but बहुत भयंकर confidence था साथ में, मतलब कुछ भी बोल दो types, So मुझे नहीं पता आप लोग के टाइम वो रोज डे या चॉकलेट डे, ये डे वो डे मनाते हो आप लोग कॉलेज में, wherein you go and give chocolate to someone whom you like, a girl whom you like or a boy whom you like, or और अभी के जमाने में boy likes a boy, girl likes a girl, that's a different thing. So whatever combination, तो हमारे जमाने में वो था. So there was this one pretty girl in our college, वो थी queen थी college की. So I am sharing because I always believe that I am young and I am like you. So इसलिए ये नहीं बोलना कि सर क्या आप सुना रहे types, So I just wanted to relate that English thing here. So rose day वाली दिन था. You are supposed to give a red rose to anyone whom you like. So I like this pretty girl. तो मैंने रोज ली ऐसे, और बाकी जो पीछे होता है ना ऑडियंस में, हमारे दोस्त जो होते हैं जिसको काम धंधा नहीं होता है, वो टपोरी टाइप फ्रेंड, वो ताली बजाते हैं, गो गिव जाओ बिंदास. And I like this thing. I went to Rose Lia and I went to that girl and gave it to her. And disaster happened there. Instead of saying something, I said something. उसको बोलना था क्या, मैं उसको जाके फ्लावर दिया और बोल दिया कि you look handsome. So everything collapsed there. So this was my English. Damn. और मुझे समझ में भी नहीं आया. वो लड़की was like, what the hell types ना, ये क्या बोल दिया, मुझे समझ में भी नहीं आया तभी तो. एंड देन मेरे दोस्त लोग जो पीछे थे उनको भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उनको भी अंग्रेजी समझती नहीं थी. तो हम बोले ये क्या रिएक्शन. देन समवन हु न्यू इंग्लिश टोल्ड अस कि भैया क्या बोल दिया टाइप. And this incident I narrate everywhere. And from then on, to master that language, to get that thing, that is what is life. That is what is life. And even today, when I believe that I'm weak in something, I ensure that I master it. That is what my mantra of life has been. And then, so coming back to that story of NDA, फिर SSB interview गए. So only 5 people got selected. And जब 3 नाम पड़े after SSB interview, तो my name was not there. And I said, okay, fine, नहीं होगा, because इनके against क्या होगा करके. First time that inferiority complex happened. But subsequently, when the 4th name was called, it was me, my name, and सब कुछ वो बोलते हैं ना, जो जीता सिकंदर देखिए मूवी, उसमें आमिर खान का एक गाना है बहुत प्यारा सा, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, वो वाली फीलिंग आ गई थी ना कि वो तेरी जहाँ सपने देखा था ये तो सपनों के बहुत पास हुआ. And when dream happens, when dream is about to realize, trust me, that's so beautiful moment, so beautiful moment. And I went through that beautiful moment at that point of time. तभी ऐसे लगा. But सपनों का टूटना सुना है आपने. सपने जब क्रैश होता है ना, भयंकर क्रैश होता है.
मतलब ना आप चितपट हो जाते हो एकदम. So same happened. यहाँ एक moment पे I was very very happy. I'm in the selected lot of NDA SSB, and when I went to medical, trust me, even today I don't wear a specs. I don't wear a spec. And on the 5th day of my medical, everything went well. On the 5th day of my medical, they said there is a problem with my eyes. 6/6 नहीं आ रहा है. And I was surprised. मुझे आज तक रीजन नहीं पता उसका. आज तक वो नेवल मेडिकल, the आर्म फोर्सेस NDA medicals. And then I was rejected. I was rejected on medical ground. Temporary rejection दिया. So temporary rejection means what happens is you have to come back and appeal to Delhi. Delhi में जो MH है वहाँ appeal करना होता. And हमारी when I came back, I was so depressed. So one of my biggest learning, and which I would also tell you, is that always have a plan B in life. Forget plan B, have a plan C also. Plan B, plan C. कि अगर आपने सोचा मैं ऐसे बनूंगा और नहीं होता है तो have an alternative. And I never had that alternative because somewhere I always believed that I will make it to armed forces. That was my belief. And the first crash happened in my life. फिर बहुत डिप्रेस हो गया. And I'm sure anyone who goes through depression knows कि how it is tough. Everything appears fine, but अंदर से आप टूट जाते हो पूरी तरह. And then when I came back, I told my father, and my father said कि move on. There is no second chance for you. ये नहीं कि तुम वापस NDA attempt करोगे, नहीं. Because we can't afford and you have to move on in your life. So it was very painful. Dil pe patthar rakhkar, he said you can't reappeal for medical also because I can't afford sending you to Delhi again. Train se jao, 2-4 हजार रुपए खर्चा होगा. Nahi, I don't want you to. So move on. So now my next option was engineering because I had decent mark in 12th. So I went on to do engineering. अब दिल नहीं लगता, कुछ चीज में दिल नहीं लगता है ना तो कुछ नहीं होगा. तो बोलते हैं ना कि दिल नहीं लगता है तो I was physically present there but mentally I was not there because I was always thinking कि मेरे दोस्त जो select हुए मेरे साथ they would be undergoing tough time in NDA. Very soon they will become officers and so many other things, So life में failure, first time मैं fail हुआ engineering में, So engineering में, but only good thing is that everybody was happy there. फेल होके भी पीपल वेर हैप्पी. जिसको 8 सब्जेक्ट में 4 में फेल हो रहे थे, आर हैप्पी. वो तो 4 ही में फेल हुआ है करके. किसी को 5 में लगा है KT, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन दिल्ली, बट यहाँ 80 KT बोलते हैं, अलाउड टू कीप टर्म. इफ यू गेट अ पेपर इन दैट 5 पेपर होगा, अगर उसमें एक में फेल हो जाते हैं तो यू गेट टू कीप योर टर्म विद दैट पेपर, कैरी फॉरवर्ड करना होता है. तो इंजीनियरिंग में ऐसे 4-4, 5-5 रखते हैं लोग. एंड एवरीवन वाज हैप्पी. जो पास हुआ उससे ज्यादा खुश तो ये जो फेल हुए उनको था. तब मैंने रियलाइज किया कि फेलियर इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. एवरी फेलियर हैज अ सक्सेस. अगर आप कोई भी लो, अंबानी, इफ यू सी मुकेश अंबानी, ही मे बी द रिचेस्ट गाय इन इंडिया. Imagine the failure his father had undergone. Imagine the failure Dhirubhai Ambani would have undergone. Road pe sote the, sees movie Guru, you will know. So every successful person undergoes failure. और कोई भी silver spoon से नहीं आता है. Every one of us, whatever strata of society you are, all of us goes through some or the other form of failure. Maybe in relation, maybe in personal life, maybe in your professional life. Or failure should happen. It will teach you and that is what is success. It's the stepping stone to success. And yes, so engineering college में ये सीखी. पहला 4 semester, it's 8 semester. First 4 semester was damn tough. समझ में नहीं आता था, मतलब दिल नहीं था. समझ में नहीं आना नहीं, दिल नहीं था. तो कैसे मर के पास हुए. And came the 5th semester. जब 5th semester में आया, 3rd year में पहला semester, that is 5th semester, then came a Navy का advertisement कि you can apply through being an engineering grad, you can apply to Navy. And trust me, वहां से फिर से वो स्पार्क जगा. लाइफ में स्पार्क चाहिए ना कुछ होने के लिए. फिर से वो स्पार्क जगा कि
यस साला फिर से कर सकते हैं हम करके ना, व्हाई नॉट. सो व्हेन यू हैव अ गोल इन लाइफ, सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन लाइफ. So today at the age of 46, I have various goals. Today I'm into fitness. Today, I ran a marathon, ultra marathon. So that is my goal, to look good or look fit at 46. So that is my goal. So you have a goal. So always have a goal. Goal hoga to sab kuch hota hai. So in fifth semester, I had a goal now कि you have to appear. Now catch ये थी ना कि हर सेमेस्टर में, लास्ट के 4 सेमेस्टर में you needed a first class. अब ये हमसे ना हो पाएगा टाइप्स, बिकॉज पहला 4 सेमेस्टर में कोई तीर तोड़े नहीं थे, तो फिर अब ये अगला 4 सेमेस्टर में क्या चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाट. बट थिंग्स चेंज. आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्टडीज, कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज, ताकि फर्स्ट क्लास आ जाए टू बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट फॉर नेवी, टू बी एलिजिबल. ये नहीं कि मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए था, ये था कि मैं अटेम्प्ट होने के लिए एलिजिबल हूँ. And in the 5th semester, I got 61%. That was just above first class. 6th semester, I got 64%. 7th semester, I got 66%. And the last semester, it was Sone Pe Suhaga, like 72%. And I was in the top 3 in the college, engineering college for the last 4. So, see, वही मैं बोलता हूँ ना कि गोल होगा तो ordinary, हम सब ordinary लोग हैं, To make that ordinary to extraordinary, you need to have a goal. And trust me, as I say to all of them, कि हम सब special हैं. All of us are special. All of us are special. 3 Idiot movie देखी है ना, उसमें एक dialogue है, वो जब बोलते हैं ना कि who are we? We are the product of that sperm and egg which have won. Out of millions of sperm, that one sperm and that egg together, that is we. So इसलिए जब भी आप आईने में देखो ना, कभी लाइफ में डिप्रेस ना हो. टेल अस दैट वी आर स्पेशल. आईने में देख के बोलो कि यार मैं स्पेशल हूं करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ, सी लुकिंग गुड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इट इज परसेप्शन. वो बोलते हैं ना, देखने वालों की आंखों में होती है. सो ऑलवेज बिलीव दैट यू आर व्हाट यू आर. Later in my talk, I would give you a valid reason for that also. So yes, so I became eligible for appearing in the short service tech interview. And I cleared the short service SSB interview, again 5 days. Second time I was giving SSB interview. First time we clear hua tha. It is toughest of the toughest, So, but luck would have been I cleared SSB interview, and then came the medical. Same thing happened. 4 days, everything fine. 5th day, वो आँख में issues फिर से आए. As I said, it was a very minor case, but NDA के time थोड़ा tough होता है medical. Probably after graduation वाली entry थी, तो I was bit lucky. So as I said, luck बहुत important होता है. तो मुझको वो डॉक्टर जो थे, एयरफोर्स के डॉक्टर थे, उसमें उस वक्त भगवान दिख गया, खुदा, भगवान, या जो भी बोले कि यार यही है करके. And he asked me, why you want to join the armed forces? So I told him कि sir, this is what I have dreamt for. This is what is everything for me. Probably वो थोड़ा सेंटी होके बोल दिया वहां पर. And I was cleared. That border case, ये 12वीं में ये साइड आ गया था, अभी ग्रेजुएशन के बाद ये साइड आ गया. And trust me, that dream was very, very closer now. Now it was the matter of coming in merit list. So for merit list for me was not at all an issue. I was all India rank 4. So on a very high this thing ranking. And that dream, वो जो सपना देखा था ना, एक छोटी सी घर में, चौल में, 100 स्क्वायर फीट के घर पे, now it materialized when I was standing at the gate of Indian Naval Academy, one of the prestigious academy of the nation, And this was the journey. This was the journey of belief. This was part 1 of the journey. Now part 2 was in Naval Academy. अब Naval Academy में academies जो होते हैं ना, आपने फौजी academy देखे होंगे, समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है वहाँ, क्योंकि every day is so busy, so difficult. मतलब अगर आप पहले 10 दिन में संभल नहीं पाओ तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. और वो लोग 10 दिन देते भी हैं कि संभल जाओ, नहीं है तो you can always opt out, because life is going to be tough. First day when I went, गेट पे गए और एकदम ऐसे है ना, छाती ठोक के अब तो हम आईएनए में आ गए. ऑफिसर ऑलरेडी ऑफिसर कैडेट है, सो वी वेर हैविंग दैट फॉल्स थिंग. और वहीं पे गेट पे ही उतार दिया वो सब कुछ. बोलते हैं ना, आपको जैसे बोलते हैं ना नंगा कर देना, हमको वैसे कर दिया पूरा लिटरली. वहीं से रोलिंग चालू हो गए सिविल ड्रेस में,
टाई भी पहन के हम खड़े थे, वहीं से रोलिंग चालू. सो रोलिंग इज अ पनिशमेंट, टाइप ऑफ पनिशमेंट इन द एकेडमी. एंड विद इन नो मोमेंट, इंजीनियरिंग 4th ईयर, आप जब फाइनल ईयर में होते हो, यू आर द बॉस ऑफ दैट कॉलेज. मतलब यू आर द बॉस, जूनियर्स होते हैं आपके, एंड आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज. सो यू आर द बॉस. बाल बिल ऐसे एकदम स्टाइल में, कभी सुट्टा मार लिए एंड ऑल दोस थिंग, एंड सडनली यू आर टोल्ड कि आपका पूरा बाल जाने वाला है. अगला अगला 2 मिनट में यू आर गोइंग टू बी टोटल टकलू टाइप्स, एंड पूरा. एंड वी वर शॉक्ड जब हमें बार्बर शॉप लेके गया. एंड बार्बर शॉप में जैसे वो बोलते हैं ना, बकरे को हलाल करते हैं ना, ऐसे सबको खड़ा किया लाइन में, एंड यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग, यू हैव टू गो सिट. वो टक 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 60 सेकेंड, यू आर, सब कुछ खत्म. मतलब आपने जो ग्लैमर पूरा जमा किया था इतने साल में, वो ग्लैमर एक मिनट में, वो ग्लैमर, इस्माइल भाई विल कट ऑफ एवरीथिंग, टक टक टक. एंड देन आई एम, सिंस बीइंग अ मलयाली, हम लोग मूंछ नहीं निकालते, हमारे इसमें प्रथा है, बोलते हैं ना, कायदे कानून प्रथा. तो हमने इस्माइल भाई को बोला कि सर मूंछ छोड़ दो. तो बोला अच्छा. जैसे ही बोला मूंछ छोड़ दो, पहले मूंछ निकाल लिया. So Ismail भाई was more strict and strong than an admiral. वहां पे जो हमारे बार्बर थे, वो भी पूरा पॉलिश हो चुका था, नेवल वाले बंदे जैसे बिहेव कर रहा था. एंड फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ अस, 30 of us coursemate, all of us saw each other and we were smiling and giggling and laughing, looking at our state. And this was the beginning, and then we were allotted dormitories. फिर धीरे धीरे, कैन यू इमेजिन, आप जब मेस में जाते हो खाना खाने के लिए, हाउ मेनी ऑफ अस ईट आर ब्रेड एंड ऑमलेट विद अ नाइफ एंड अ फोक एंड अ स्पून एंड ऑल दिस नॉनसेंस, लाइक कौन हम लोग खाते हैं? आप बताओ, आप में से कोई खाते हैं घर पे ऑमलेट? इसमें मैं तो एकदम, आज फौजी हूँ, नाउ आई एम वेटरन, मैं आज भी ऑमलेट ऐसे तोड़ के खाता हूँ हाथ से. Shaurya, is there a network issue from my side? No, from sir side. No, it's from sir side. Sameer, will you please message sir about this? Yeah, I'm doing it. Arsit, somebody messaging to sir? Yes, sir. Okay, fine. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Yeah, audible, sir. आई थिंक बीच में छूट गया था, जैसे ही मेस वालों को गाली देना चालू किया था, वहां कनेक्टिविटी चली गई, नेवी वाले कोई सुन लिया लगता है ना. सो या, सो दैट्स हाउ. सो फर्स्ट टाइम जब गया था, वी न्यू, पता नहीं था कि ये तो शुरुआत है करके. सो मेस में क्या होता है ना, कैडेट मेस में, आप जब बैठते हो, आपके इर्द गिर्द 4 सीनियर्स बैठते हैं. एक यू आर फर्स्ट टर्मर, तो सेकंड टर्मर, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर, सिक्स टर्मर. एंड द थिंग इज कि आपने गलती की, लाइक आप अगर ऑमलेट खा रहे हो, इफ यू यूज सम अदर फोक, बहुत सारे फोक होते हैं, आपने एक ही फोक देखा होगा ना, एकेडमी में 3-3, 4-4 फोक होते हैं. ऑमलेट खाने के लिए एक होता है, फिर अलग अलग फलाना ठिकाना बहुत सारे होते हैं. एवरी यू हैव टू ईट दैट थिंग विद दैट ओनली, आपने मिस्टेक कर लिया, आपका ब्रेकफास्ट खत्म. 7 मिनट की ब्रेकफास्ट की टाइम होती है. उसके बाद इफ यू डू वन मिस्टेक, योर ब्रेकफास्ट इज ओवर, यू हैव टू क्लोज योर प्लेट. एंड ट्रस्ट मी, 5 स्टार का खाना होता है एकेडमी में ना, इतना ऐसे ऐसे डिशेस होते हैं प्यारे प्यारे, एंड आपकी आंखों के सामने से जा रहा है, यू कैन नॉट ईट, इमेजिन. एंड फर्स्ट 10-15 days इज सफरिंग, बिकॉज आपको खाने नहीं मिलता, बिकॉज यू आर मेकिंग सम ऑफ द मिस्टेक और द अदर. एंड अगर आपने मिस्टेक किया, आपका जो इमीडिएट सीनियर होगा, ही गेट्स पनिशमेंट. सेकंड टर्मर्स गेट पनिशमेंट, थर्ड टर्मर्स, वो फिफ्थ टर्मर होगा तो थर्ड टर्मर को भी पनिशमेंट देगा. एंड दैट इज हाउ द वैल्यूज एंड ट्रेनिंग हैपन इन द फौज. दैट्स हाउ द कैमराडरी इट्स बिल्ड. अब जो सर्वाइवल के लिए क्या होता है ना, जब ट्रस्ट मी, जब सर्वाइव करना होता है ना,
हम लोग बदल जाते हैं, आदमी औरत जो भी है, इंसान जो बोलते हैं ना, हम बदल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल। आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ा हुआ है लाइफ में? इमेजिन अ डॉग चेजिंग यू, यू विल रन फास्टर देन उसेन बोल्ट, ट्रस्ट मी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। जब सर्वाइवल की बात होती है ना, सब सीख जाते हैं। एंड नाउ व्हेन वी न्यू इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर सर्वाइवल, सब कुछ सीख गए। 4 क्या, ये क्या, नाइफ क्या, जो ला भैया 7 मिनट में क्या करना है बता। एंड 5-6 महीने में वी वेर एक्सपर्ट 4 मिनट में ब्रेकफास्ट हो जाता, टक 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 टक, वॉट एवर. So that is how they train, they teach. So every aspect of etiquette they taught you: how to dress up, how to speak, how to dance, how to horse ride, how to do. मतलब इमेजिन बॉम्बे के गली में कहाँ हॉर्स को देखा होगा, मतलब जिंदगी में हॉर्स कैसे दिखता है सिर्फ हमने टीवी में देखा था, अच्छा इसको घोड़ा बोलते हैं टाइप्स, नो. And here you are nurtured to being a complete all-round guy or a girl, or for that matter an officer. एंड देन रगड़ा चलता रहा, फिल्म देखने भी जाते थे, कभी बोलता था कि आज फिल्म वाला संडे है करके ना, तो डर लगता था। लोग फिल्म देखने खुश होते हैं ना, हमें डर लगता था कि यार फिर थिएटर जाना है, फिर ये सीनियर्स आगे होंगे, फिर रोलिंग होगी। थिएटर के बाद पिक्चर देखने के बाद रोलिंग होती थी, पनिशमेंट, एंड यूज्ड टू ड्रेड गोइंग टू ऑल दोस प्लेसेस. बट यस, ऑल दोस ओनली फॉर फर्स्ट 6 months, एंड देन एवरीथिंग चेंजेस धीरे धीरे. दैट इज हाउ द कल्चर ऑफ द आर्म फोर्सेस इज. एंड देन कम्स द लास्ट डे. बहुत पनिशमेंट मिली, बहुत रेस्ट्रिक्शन हर चीज में. I would tell an incident. There was this lady officer who was posted there. So once she was coming, a pretty looking officer. Once she was coming, तो हम 4-5 कैडेट्स थे, हम जा रहे थे भाग के, धड़ 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 होते ना फौजी पिक्चर में आपने देखे होंगे. तो when she was coming in uniform, all of us, we are not supposed to look into her eyes. We are cadets. तो हमने सब ऐसे भागते भागते जय हिंद मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम बोल के we just went past. So she stopped us. And she said, why didn't you guys look into my eyes and say good morning? Why didn't you do that? Am I not that pretty and all? Punishment देना था तो वो भी कुछ बहाने बना रही थी. तो we were not knowing क्या, we said sorry ma'am, sorry, फिर punishment वहाँ रगड़ा दिया कि not looking into her eyes. नेक्स्ट टाइम कुछ 1-2 वीक के बाद अगेन शी क्रॉस्ड अस, तो ऑल ऑफ अस वैसे एकदम एकदम छाती तान के उनके आंखों में आंखें डाल के, मैडम गुड मॉर्निंग, एंड देन शी पनिश्ड अस अगेन सेइंग दैट हाउ डेयर यू लुक इनटू माय आईज. सो यू नेवर न्यू कि चल क्या रहा है, मतलब सही क्या है गलत क्या नहीं पता, बट चल क्या रहा है. कभी रात को 10 बजे के बाद यू आर अंडर पनिशमेंट, यू आर रोलिंग इन गटर, you are on cupboard, standing on cupboard in murga positions, you are doing some or the other thing. Now if you think back, अभी अगर आप सोचते हो ना तो मनी मन हंसते कि क्या था यार वो समाना, and thereafter एक फौजी के लाइफ में या एक हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ मोमेंट होता है, बहुत प्रेटी होता है, बहुत ब्यूटीफुल, आप भूल नहीं सकते हो. हर एक इंसान, हम पैदा होते हैं मर जाते हैं, उसके बीच में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें याद आती है. all of you will have that, remember, either like अगर किसी का शादी हुआ या कोई एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट हुआ या 10वीं पास होना या 12वीं पास, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे. तो फौजी के लाइफ में वन ऑफ दोज बेस्ट इंसिडेंट और बेस्ट थिंग टू हैपन इज पासिंग आउट परेड. पासिंग आउट परेड में क्या होता है, यू क्रॉस द अंतिम पग. आपने अगर कहीं देखा, अंतिम पग इज द लास्ट टाइम यू क्रॉस इन द एकेडमी. आप अंतिम पग से जाते हो. सो अंतिम पग से जब आप जाते हो तो आपके ऊपर से चॉपर्स और डॉनियर्स फ्लाई होते हैं, वो फ्लावर्स शावर करते हैं आपके ऊपर, फ्लावर्स पेटल्स डालते हैं ऊपर से, और आप रो रहे होते हैं. एवरीवन इज क्राइंग बिकॉज ऑफ द मिक्स इमोशन, because from tomorrow onwards, at that moment you will be separated from academy, you will be separated from your course mates, and you never know कि कल अगर वॉर में जाना पड़े तो आप शायद शहीद भी हो जाओगे. So it's a mixed emotion, plus you are happy कि you are becoming an officer, so it's a mixed emotion, आप रोते हो. Now इंडिया का सबसे अमीर जो बंदा है, दैट इज मुकेश अंबानी एंड अडानी एंड ऑल दिस पीपल. सो all this wealth put together, I'm going to make a statement here, दुनिया का सारा पैसा एक कर दो तो भी आप वो मोमेंट खरीद नहीं सकते हो. That moment is to be earned.
You can buy a Sachin Tendulkar to play in your IPL team. You can buy a Virat Kohli to play in your IPL team, but you can't buy this moment. This moment is golden moment, and this has to be earned. And this is only earned by a Fauji, you know. And that's why I would recommend all of you to give at least a try to go into SSB and to be in the armed forces through whatever entry. And it's such a beautiful moment. And उसके बाद जैसे आप अंतिम पर क्रॉस करते हो, आपके पेरेंट्स आपके दोनों साइड खड़े रहते हैं, मम्मी ऑन द लेफ्ट एंड फादर ऑन द राइट. दैट्स अ ट्रेडिशन. मम्मी क्यों लेफ्ट में होती है? कि मम्मी हार्ट के क्लोज होती है ना सबकी, तो इसलिए मम्मी हमेशा लेफ्ट में खड़ी रहती है और फादर को साइड पे कर देते हैं, जा भाई तू राइट पे खड़े रहकर, कम ऑन गो टू राइट. एंड फिर एक ब्यूगल बजता है. ब्यूगल के साथ आपके पेरेंट्स आपका एप्यूलेट निकालते हैं. व्हाइट कपड़ा होता है एप्यूलेट पे, नेवी का. आर्मी में दे कॉल्ड इट पिपिंग एंड नेवी वी कॉल्ड इट शिपिंग, यू नो, स्ट्राइप शिपिंग. तो व्हाइट कपड़े जैसे खुलता है तो आपका रैंक दिखता है, golden with your crimson and this thing. And that is the time आप उसके बाद वो मोमेंट से, यू आर नॉट सन एंड डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस नायर. आपको देश के लिए सौंप देते हैं कि आज से आप देश के लिए हो करके. देन वी टेक दी ओथ ऑफ, हम बोलते हैं ना, हम ओथ लेते हैं मार मिटने का, नॉट मर मिटना. टीवी में सब बताते हैं हम देश के लिए मर मिटेंगे. मर मिटेंगे इज अ नेगेटिव थिंग, मार मिटेंगे इज अ पॉजिटिव थिंग. उसके दौरान अगर आप मर जाते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल. बट ऑलवेज मार मिटेंगे. फिर हम वो ओथ लेते हैं एंड देन वी मूव इनटू द रैंक्स इन द नेवी. वी गो इनटू ट्रेनिंग. मेरे साथ क्या हुआ कि जैसी यू नो व्हेन वी पास्ड आउट ऑफ एकेडमी वी वेंट फॉर ट्रेनिंग वायो कोर्स. सडनली वायो कोर्स बंद कर दिया सारा, बिकॉज दैट वाज कारगिल वॉर 1999. So we all were part of Kargil war. So as I said, Captain Batra is my senior, 6 months senior. Saurabh Kalia, these are the popular names in the army. So that's why I'm there. Saurabh is my coursemate, Vijayan Thappar, coursemate. Then, you know, Anuj Nair, senior. So all these prominent names are 5-6 months senior. So we were 22.5. I was 22.5 years old when I went into war, the Operation Talwar. You know? And तभी कुछ समझ में नहीं आया. So when I reported to warship, I reported to a ship called Kirpan, INS Kirpan. So this was Kargil war. Kargil war was fought by Army, Navy, Air Force. Only because you know, media and Barkha Dutt were there in Kargil. So it was always thought that it is only Army who fought. But Army fought it prominently at Kargil, Dras, Batali, Kori and all. But we were at the you know, international waters. So Navy called it as Operation Talwar. So I reported on that ship. And the first emotion is fear. जब वॉर होता है ना, पहला इमोशन होता है फियर. कोई बोले मुझे डर नहीं लगता है तो झूठ बोलता है, यू नो. फर्स्ट इमोशन इज फियर. एवरीवन फियर फॉर देयर लाइफ. Not only for their life, thinking about parents, you know, children's brother, boyfriend, girlfriend, जो भी है. And I was dating my wife that time. So today she's my wife and we were dating pretty long. And here I was at 22.5 ki war mein ja raha hu karke. But trust me, after a couple of hours, the euphoria takes over. फिर ऐसे realize होता है, यार इसी के लिए तो फौज ज्वाइन किए थे ना. That is why you are a Fauji, to go to a war. And then everything, then you know, for us and for all of us, country should come first. Country should come first, irrespective of anything. Then comes for Fauji ke liye, country come first. Then comes you know, your men, your women who are there in uniform with you. Then come all other things, you know. Your personal comfort and family comes at the third spot. So that is what we have been taught. And yes, so we were at Karachi, off Karachi. कराची से हम 33 नॉटिकल माइल्स पे थे. कराची की लाइटें दिखती थी, टॉप की लाइटें ना, कुछ. तो बस पाकिस्तान का नसीब अच्छा था तब कि बच गए, मिसाइलें फूटी नहीं उन पर. क्योंकि सी दे वेंट टू UN, दे स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज वी हैड घेर आउट द एंटायर पाकिस्तान. They had only 6 days of fuel left in their country. And they were under tremendous pressure. Navy was putting tremendous pressure. और जब हमने बोलते हैं ना 1971 when Navy participated, the maps changed.
तो इसलिए हम थोड़े गर्व से बोलते हैं कि जब जब नेवी पार्टिसिपेट करती है तो नक्शे बदल जाते हैं कंट्री की. एंड पाकिस्तान वाज लकी, नहीं तो कराची सिर्फ बिस्किट्स और बेकरीज में रह जाते हैं, यू नो. कराची कराची नहीं रहता, बट दे वर लकी दैट टाइम. So that's how the war story, and I learned a lot being the junior most in that ship. Bhag daud karna, and when you see a war closely, you will realize that you have matured as an individual. You know, that was my tryst with Kargil war. So I wear a Kargil war medal on my chest, both Operation Vijay and Vijay Star. And yes, so this was the life beautifully spent. I spent 10 years in Navy. I'm a technical officer and engineer. And subsequently, I was posted in 3-4 units of Navy. I was posted on INS Virat for some time and a couple of other ships. And then I was with Marine Commandos for 2 years. Not a Marine Commando, but with a Marine Commando base for 2 years. I opted for Special Forces, but being a short service commission officer, Navy didn't permit. So I maintain that fitness even today. I try to maintain that fitness even today, because Special Forces, Marcos and all are totally different league people, you know. So I, being in the Marcos base, I wanted to opt for it, but somehow Navy didn't permit, being a technical officer. And yes, in my 10 years, I won many awards, accolades, my uniform is decorated. And then I decided to hang on the uniform. Now, why I decided to hang on uniform, people say, ki, sir, aap continue kyun nahi kiye? So I was a short service 10 years commission officer, and I was given an option to continue. But see, life hai, so no regret. My wife was working, she's a, L&T, she works for L&T. So had I choose to continue in Navy, her career would have jeopardized. She is also educated. So I never wanted that to happen. So it's all about equality, you know, and you have to respect your partner's, education and everything. It is not that wherever you go, she will come after you types, you know. We didn't believe in that. So we took a conscious decision and I moved outside. I moved as a veteran. But irrespective of that, 13 years now after Navy, but I am still a Fauji, always a Fauji at heart. And soldiers never die, you know, rank never retires and soldier never dies. That is what is my mantra. And so my next innings was as a civilian, as a veteran. So I gained a lot of weight when I left Navy. Like I was detected with hypothyroid. I was 107 kgs once upon a time. And then I restarted running again, the basics of, the forge. And that's how my love with marathon started, marathon running. So I run almost every day. So I have run more than 100 plus half marathons and, 30 plus full marathons. For full marathons is 42 kilometer, half marathon is 21 kilometer, and ultra marathons are more than 50 kilometers, right? So I, was part of Indian contingent in the year 2019, completed 89 kilometers of race in 11 hours, 48 minutes. And, it was beautiful at that age, 43, to complete 89 kilometers. So as I say, age is just a number. It is all about your thought. And life has to be humorous. Always, whatever you see, if you are humorous and if you diffuse this situation with humor, everything goes fine. And that's why I wrote a humorous story and book anecdote. My 8th book is going to release in April. That is about Navy and uniform, humor in uniform. So whenever it releases, I would recommend you to read a lot of humorous stories in uniform. A lot of things happen in uniform wherein you put it as an anecdote. So I blog, I write on Instagram. So I'm on Instagram as Bijay Nair. So छोटे stories लिखते रहता हूँ, and I run. And as a corporate guy, yes, I'm a leader, corporate leader. I believe in leadership by action. I'm a vice president there, and I have a good team. And yes, so this is what my life in, whatever 45 minutes I could narrate to you, 45 minutes to 50 minutes. And so the story of my life is, in short, if you say, the experience of experiencing an experience.
experience the experience of experiencing an experience. And that's a beautiful experience. The life is beautiful experience. So as I said, अपने आप में विश्वास रखो, belief रखो, and stand in front of mirror and say, hey, look, I am special, you know, flower नहीं हूँ मैं, fire हूँ करके, right? So that is what your life has to be. So Jai Hind, and yeah, so as I said, country comes first. Always keep that in mind. It is your country, irrespective of who runs this country, any politicians or any political party, I don't care. But as a country, it should remain your first priority. So Jai Hind. Really inspiring, sir. Sir, I just want to say something, sir. जब आपने सर वो last वाली parade वाली अपनी last की बात story सुनाई, sir. Sir, I just got goosebumps, sir. Really, sir. Yeah, so that's a goosebump moment. Even today, like when I narrate it to you, or whenever I speak to any forum, I get goosebumps. You know, even thinking of that. So I'm sure you definitely would get a goosebump. Imagine when you are there, when you're crossing that Antim Pag, so that multiplies 1,000 times, right? So I too want to say something. When you were narrating your story, I literally felt different emotions. I was laughing, I get tears, I got emotional, and it was full of emotions. Seriously, I just want to ask you one question. You said when you were giving that NDA's interview, you were quite confident. So I want to ask why, like, what were the reasons that made you so confident about it? Like, we generally get nervous during our normal interviews too. So yeah, your mantra. So why do you say that we are self-confident or confident? Because confident is an action of repeated training. Confident is an action of repeated training. So when you train yourself for that, trust me, you're confident. I prepared for NDA. It was not that a fluke wherein I go and just write an exam. So I prepared, I had given my everything, you know, for that. You know, so that's why we say self-confidence is not a word simply. It is just a action. It is a hard work which you put for that action to happen. You know, now like people, youngsters like you are hosting an event like Combrosia. I'm sure you would have rehearsed it, you would have discussed it, you would have prepared, you would have put in a lot of effort. ये नहीं कि suddenly आज सुबह तुमने बोल दिया कम्बरोजिया रखने हैं, 4 लोग को बुलाओ और नायर सर है उनको कॉल कर देते हैं, and then there is a, it wouldn't happen this way. You guys have been working for past, I remember Samir would have contacted me some 25-30 days before. That's planning. And that's how you shortlisted various speakers. You knew what are the agendas. You did the follow-up. That's why the event is beautiful. That is confidence, you know. नहीं तो सुबह उठ के बोले आज कम्बरोजिया करते हैं तो खत्म ना, everything is gone, right? Yeah. Thank you, sir. Definition of confidence is that. Good afternoon, sir. I wanted to ask something. Yeah, please. Yeah, first of all, sir, I would like to say thank you so much for accepting the invite and coming as a guest speaker. I wanted to ask that after the Navy tenure, you started writing books and you took on to motivating young minds. How has this transition been for you? So see, as I said, change is the only constant thing, you know, change is the only constant thing, and you have to change with time. And when if I have to survive, and if you know, bolte hain na, if I don't come into amongst you guys, then I bolte hain na, rust hoke khatam ho jate hain in my thoughts and this thing. So my primary you know, it's a selfish motto also, to keep myself young. I am interacting with you all guys, right? And so when the change happens, I was a good writer in Navy. I used to write. So my emotions are humor mostly when I write. So I thought, why not convert it into book? So my first book, They Inspire, is about 42 stories of people, motivational stories. It's not about Sachin Tendulkar or Rahul Dravid. It's about common people. Every common people have a story, right? All of us have story.
When you close your eyes and just sit for a minute, you will have a story. As Samir Pasi, you will have a story, right? Kahin na kahin, every one of us have story. Some have positive, some have negative, some have struggle, some have happiness. So we have a story. So we all are a story in ourselves, right? So I just touched on that aspect. I'm a storyteller, so I do a lot of storytelling, especially on Friday night. Bhoot ki kahani sunata hu in Instagram pe. These days I don't do because my wife is after my life. Kya negative sunate ho bachcho ko? But I love that, right? So yeah, so my 2 books have been pretty good, and I won the Best Author Award in 2021, just 2 months back. And I'm sure my next book would be much more hilarious. It's about uniform. So yeah, so my books are available on Crosswords and Notion Press. It's there on Amazon, so you can check that out. But I would recommend all of you to subscribe to my YouTube channel. That is no nonsense channel, and it is called Fauji Talks. Where I have interviewed, like the way you are interviewing me, I have interviewed a lot of Faujis, General G.D. Bakshi and, Vivek Jacob. And you should listen to those amazing things. That 1 hour, rather than, binge watching some stupid Netflix serial, wherein you binge watch for 8 hours without any motto and this thing. Watch such channel which will help you in developing yourself. And this is your growth age, all of you, like you may be 21, 22, 24, 25. This is your growth. This is the era of shaping you up till 30, 32. उसके बाद 32, 33 के बाद तो आप जिंदगी के चक्की में पिस जाओगे आप. अभी आपका मौका है, so सवारो अपनी जिंदगी, बोलते हैं ना. So that's why Samir. Thank you so much, sir. Thank you. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरे पास आपके लिए 6-7 क्वेश्चन है सर. मैं खुद डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, इसलिए सर मेरी तो सर जैसे मतलब हम में से बहुत लोग होंगे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं. मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया, इसलिए मैं आर्मी या ओटीए के लिए एलिजिबल हूँ. तो अभी मेरे पास जैसे 2 साल का समय है कि मैं अपना जो पहला अटेम्प्ट दूंगा वो मेरे लिए 2 साल का होगा. तो मैं कैसे मतलब आप कैसे एडवाइस करेंगे मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपने से खुद से प्रिपेयर कर रहा हूँ. मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा, किसी की गाइडेंस नहीं है मेरे पिछले स्कूल के टीचर्स के अलावा. जो मेरी प्रिंसिपल मैम है या मेरी इंग्लिश की टीचर है वो मुझे गाइड कर रही है. मैं उनसे जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे पूछता हूँ. तो आप कैसे करेंगे कि मैं अपने डेली, क्योंकि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होते हैं, मैंने 15 क्वालिटीज पढ़े किए होते हैं, तो मैं क्या क्या अपने डेली रूटीन में करूँ, कैसे प्रैक्टिकल थिंकिंग या कुछ करूँ जो मैं उस चीज को डेवलप कर सकूँ सर. ओके, तो शुभम, इन शॉर्ट बताऊंगा. जो भी 7 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में लेके मैं बताऊंगा, नहीं तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं दे दूंगा. सो एक अभी से अगर आपको प्लान करना है ना, पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो. बिकॉज सबसे थिंग इज व्हेन वी से फिटनेस इज अबाउट फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस. मेंटल फिटनेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो बी पॉजिटिव. पहले तो लाइफ में पॉजिटिव बनो, और कभी अपने आप को ना सिंपैथी मत दो और सेल्फ पिटी मत दो कि मैं छोटे से जगह से हूँ, मैं इंग्लिश नहीं आती है. तो इंग्लिश नहीं आती है, इट्स लाइक मेरा कहानी है कि इंग्लिश नहीं आती है तो तुमने किया क्या. इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है, ठीक है, तो तुमने किया क्या उसके लिए, उसको ये करने के लिए. सो रीड इंग्लिश बुक एंड टॉक टू पीपल इन इंग्लिश. लोग हंसेंगे पहले कि क्या अंग्रेजी बोल रहा है. रिमेम्बर दैट स्टोरी, जब मैं लड़की को फूल दिया, हैंडसम बोल दिया, तो सारे लोग हंसे. घंटा फर्क पड़ता है अपने को. बिंदास करो, मेहनत करो. एंड सेकेंड थिंग इज फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गेट इनटू पुलिस केस. ट्रस्ट मी, don't get into police case, don't get into accidents which will bike accident जहाँ टांग विंग तोड़ के रॉड विद डाल दो. ये सब चीजों से दूर रहो. These are the practical things which I am saying. Then read papers. OTA especially CDS entry को जाओगे, current affairs have to be really really strong. You have to have your current affairs really strong. और जो पिक्चर टेस्ट वैट है, एक पाथफाइंडर पब्लिकेशन किताब आती है, वहां से देखो. That's a very good book. I have read from that so many years back. So I'm sure that is a good book to read. And OLQ क्या है? OLQ हम सब में कूट के भरा है. वो कब बाहर निकाल रहा है वो हमें पता होना चाहिए. वो जो बोलते हैं ना कि आपके पीछे एक कुत्ता और सांप है, एक कुत्ता पीछे पड़ा और एक सांप खड़ा है, क्या करोगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वन OLQ. पहले भागोगे आप वहां से, है कि नहीं? या कि वो देखेगी कि कुत्ता कब काट रहा है या सांप मुझे कब धस रहा है, नहीं ना. सो OLQ तब निकल के आता है अपने आप.
presence of mind. That OLQ is called presence of mind, right? And then empathy is very, very important. अपने आप में कभी घमंड मत करो. Be grounded always. Have good friends, set of good friends, and it matters. आप क्या company रखते हो matter करता है. You know, company matters whether you like it or not. It's a very blunt statement, but company matters. अगर आपके साथ वाले जो अच्छे सोचते होंगे, प्रोग्रेसिव सोचते होंगे, तो you will progress, right? और अगर वही नेगेटिव, वही बोलेगा सुट्टा मारो, ड्रग्स मारो, तो you will also go into that way. So 2 years is good time to build on you. मेरा एडवाइस है कि करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करो, और जो एंट्रेंस एग्जाम है CDS का, उसके लिए तैयारी करो. SSB तो हो जाती है. When you gradually come into 1 year, it will happen, right? और Instagram वगैरह पे follow some good people, those who like DV सिंह है या रुद्राशीष है. Those we are all defense aspirants. Aspirants से ऑफिसर बन के हमने वो जिंदगी जी है, you know, rather than someone who only have that idea कि अच्छा ऐसे होता है डिफेंस में. So you connect to people who are positive. Always connect to, irrespective of जो डिफेंस नहीं होगा. ऐसे प्रोफाइल देखो जो पॉजिटिव झलकता है. जहां से यशमोर सर है, मेजर जनरल यशमोर सर, फॉलो हिज चैनल, फॉलो हिज यूट्यूब चैनल. इतना इंफॉर्मेटिव होता है सर का चैनल, मेजर जनरल यशमोर, फॉर एनी करंट अफेयर. तो CDS और इसके लिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन. ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम देयर, है ना. और स्विमिंग सीखो, स्विमिंग झक मार के सीखो. नहीं आया तो एकेडमी में बहुत बुरा हालत होता है. सो स्विमिंग सीख के जाओ. टू ऑल ऑफ यू, all those who are aspiring to join the armed forces, learn swimming. And till the time you are 24, 25, till the time you have last attempt, keep attempting. Keep attempting. आज ही एक लड़का का मैसेज आया before I am speaking to you. He cleared in 7th attempt. 7th attempt. अभी मैसेज आया सुबह कि सर thanks so much for guiding and motivating. Finally I cleared करके, you know. So ऐसे. And defense selection is a very uniform platform. और कभी ये नहीं समझना कि ये आर्मी वाले ही सेलेक्ट होंगे, नेवी वाले सेलेक्ट, बैकग्राउंड वाले होंगे, कॉन्वेंट वाले होंगे. ऐसे कुछ नहीं होता है. मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ उसके लिए. सो व्हेनेवर यू फील, एंड इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, लाइफ में कभी डिप्रेस फील करो या ऐसे फील करो कि हमारा कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा प्रोफाइल देखो, मेरा फोटो देखो, बोलो अरे ये कमीना बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा करके. डू दैट, राइट. Yes, sir. And sir, I read that कि वो बैलेंस पर्सनालिटी खोजते हैं. मतलब 3 टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिकल, इंटरव्यू, GTO. वो तीनों बैलेंस पर्सनालिटी खोजते हैं. तो बैलेंस पर्सनालिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या है सर? और वो मतलब मीनिंग मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ. ओके, तो हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारा SSB पे. सो बैलेंस, सी हम कौन है, हम कौन है? वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट, आवर स्पीच एंड आवर एक्शन. We are the product of our thought, our speech and action. हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम क्या करते हैं. ये तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. वही वो SSB में ढूंढते हैं कि आप बोलते कुछ हो. आपने बोल दिया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, यू नो, मैं किसी से बात नहीं करता, आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखते हो. और जब GTO टास्क होता है, आप ही सबसे ज्यादा कूद रहे हो सबके बीच में, यू नो, यहाँ भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो, वो ग्रुप डिस्कशन में किसी को बात करने नहीं दे रहे हो. सो देन देयर इज अ मिसमैच ऑफ योर थॉट एंड व्हाट यू आर शोइंग एक्शन. सो SSB में वो देखते हैं कि ये तीनों पर्सनालिटी मैच हो रही है कि नहीं, एंड इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. 5 दिन SSB इंटरव्यू क्यों रखते हैं? किसी की शादी थोड़ी ना 5 दिन बुला के खिला रहे हैं तुमको, खाओ खाओ खाओ. नहीं, 5 दिन का इंटरव्यू इसलिए होता है कि आपको आपकी पूरी पर्सनालिटी को टटोलते हो. ये बंदा यहाँ झूठ बोल रहा है क्या, यहाँ झूठ बोल रहा है, यहाँ झूठ, एंड देन दे सी द कंसिस्टेंसी, है ना. एवरी कैंडिडेट पे 30,000 रुपीज स्पेंड होता है SSB में. किसी को शौक नहीं है ना. दे वांट गुड पीपल इनसाइड, नॉट गुड, दे वांट पर्सनालिटी व्हिच मैचेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्सनालिटी. APJ कलाम साहब थे, ही डिडंट क्लियर हिज SSB इंटरव्यू, यू नो. वो बोलते हैं मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मैं SSB इंटरव्यू क्लियर नहीं किया. अमिताभ बच्चन, वो नहीं हुए. वो बात की बात है कि दे बिकेम, यू नो, व्हाट दे आर टुडे. सो ये था ये. सो थॉट, स्पीच, एक्शन, ये तीनों याद रखो. तुम जो बोलते हो तुम करते हो क्या. बोलते हैं ना, सलमान खान का डायलॉग है ना, मैं जो बोलता हूँ नहीं करता हूँ. यानी अक्षय कुमार का, राउडी राठौर, जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं करता. कभी नहीं सिलेक्ट हो गया SSB में ये डायलॉग से, है ना. जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, ऐसे बोलो. राइट, ओके. थैंक यू सर. जय हिंद सर. या जय हिंद. साक्षम, टेल मी.
Sir, I wanted to ask that how did you imagine military life before you joined, and how did your perception changed after joining the military life? Yeah, so yes, so before joining the military life, as I said, I was not from the defense background. So whatever idea I had was from, that was Shah Rukh Khan की जो serial थी और कुछ जो series देखते तो very limited knowledge, very limited. ये पता था कि ना कि फौजी यूनिफॉर्म पहनो तो साला अपने आप खूबसूरत दिखोगे करके. अपन बहुत क्लियर थे लाइफ में कि you look bloody handsome when you wear a फौजी uniform, and that was my biggest motivation. And when I joined the armed forces, perception changed completely. जो people feel कि बहुत खुशी life है, ये like it's a tough life. It is a tough life. You have to sacrifice. आप जो यूनिफॉर्म और ग्लैमर देखते हो इंस्टाग्राम पे जो दिखता है ना, वो सिर्फ वैसे ही. इट्स ओनली 1% ऑफ व्हाट एक स्पेशल फोर्सेस का यूनिफॉर्म में अगर हम फोटो डालते हैं. Imagine the hard work gone beyond. Imagine the family sacrifice. Imagine what happens if some casualty happen. अगर फौज में अगर कुछ हो जाता है तो it's a tough time for government to support. Lot of things internally goes on. So एक फौजी का life, एक फौजी family का life is too tough. Glamour, yes, glamour part है. बॉल डांस करते हो, ये करते हो, that is only part of it. राशन बोलते हैं ना, subsidized राशन मिलता है, that's fine. दारू मिलती है, that's fine. That's all part and parcel of that. अगर सिर्फ दारू और राशन के लिए जाना चाहते हो तो I think supermarket is the right place rather than being in the armed forces. Okay, so perception changed and yes, transformation happened. जो मैं था 22 साल में और जो मैं आज हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंट. थॉट प्रोसेस, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, एवरीथिंग चेंज. झक मार कर 22 साल के उम्र में जब आप पास आउट हो जाते हो, सब लेफ्टिनेंट बनते हो या नेवी में, सो यू आर गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ आईटी कंपनी में आप 45 साल के भी हो जाते हो, टीम मेंबर ही रहते हो, टक 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 करते रहते हो. वहां 22 साल पे आपको बोल देता भैया ये पाकिस्तान है, ये यहाँ इसको जाके मारना है, मार क्या जा. एंड देन यू कांट रिलाई ऑन पीपल की देन यू आर अ लीडर. You are made leader at the age of 23. That is the difference. कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें लीडर बनाएगा 23 पे? जब लोग पास आउट होते हैं ना सिविल में, when you do colleging and when you graduate, some parents will gift you Activa, कोई कार गिफ्ट कर देगा, कोई बाइक गिफ्ट कर. जब हम पास आउट होते हैं ना फौज में, so we are gifted with a 400 crore ship with a fighter aircraft 400. हम वो चलाते हैं. That is the difference between normal graduate and the graduate from the armed forces, on a lighter side. So as I said, all of us are special irrespective of you wear uniform or not wear. कल को ऐसे हुआ कि मैं फौज में नहीं जा सकता, but live like a फौजी. उस पे तो कोई बंदगी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई रोक नहीं है, बिल्कुल जियो फौजी जैसे. Live a disciplined life. That is what is important, And I know many youngsters who live like that. Even Instagram पे बहुत सारे जो admin handles के, few of them are really good. मुझे ऐसे लगता है कि ये फौज में होना चाहिए. But they live that life. At some point of time, they have missed the armed forces, but they live that life, So yes. So as your question, a lot of things changed for me. The perception which I thought जाने के पहले ऐसे होगा और फिर जाने के बाद पता चला ऐसे. Nothing is hunky dory. It's a tough life. But it's the life. It's a tough life. It's the life. Thank you so much, sir, for inspiring us. We are hoping there are no more questions now. So it was a pleasure to listen to you, sir, and I hope the listeners enjoyed it as much as I did. I personally had goosebumps listening to your stories, and we hope to get acquainted with you in the future as well. So with this, I would like to welcome Dr. Mohammad Shahid Ali, sir, to give his vote of thanks. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Mohammad Shahid Ali. Yeah, good afternoon. On behalf of Commercia, Department of Commerce, Motilal Nehru College, this is not to say only thanks, but after listening you after around 1 hour, I have a lot of things to just tell to all the people that how the things can be learned and transform a person himself by listening you people, especially one who is
the diverse in different career as well as different knowledge criteria as you have also. So runner, novel officer, blogger, writer, speaker, motivator. So all of so and I'm damn sure that the student you lot of things from your side, and maybe they will following. I was NCC candidate also in my college career, and as you said, कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है. So I was in same position when I was in college and having the NCC camp in different location कि रात को 2 बजे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे आ जाओ, बैंड पोजीशन हो जाओ और मुर्गा बन जाओ और डड्डू चाल चलो. So the things which over there, which I totally think when you were explaining the entire things were coming in my mind, and the same thing happening in front of me also. So sir, I am very thankful that you your valuable time and you taught us many things, and as you said that everyone have a story. Yes, I'm very much sure that everyone have a story, but sir, your story and our story and everyone's story are very totally different, because you had motivation, hardworking, positivity, experience once you practicing the things, and then confidence. So obviously because of these things your entire life is different than other ones. That's why you are here, and maybe inshallah you will get the more things in your life also, because you are still young as the students are, as you said also. So inshallah next time we will always be calling you for the our student. Maybe they will get the benefit from your opinion, from your positivity, from your approach also. Thank you so much on Department of Commerce, Comrosia team, and Motilal Nehru College. I am very much thankful to you, sir. And maybe next time you will also available, and the student will follow you in the your link which you shows to everyone. As I am also seeing that your Instagram profile and the YouTube channel also. So it was very grateful to all of us. Thanks for enlightening us. Thank you so much. Thank you, Shahid sir, and inshallah, matlab, if waqt permit and the situation permit, I come to Delhi pretty often with my office work, ministry and all. कभी वक्त है, सारी कॉलेजेस को बोलता हूँ कि ना फिजिकल मीटिंग की बात अलग होगी, ऑनलाइन बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, और you know what you see me is only half scaled down. मेरी बातें ऐसे नहीं होती है, हम बोलते हैं ना फ्लावर वाला नहीं, फायर वाली बातें होती है पूरी. तो whenever we meet in person, whenever you invite, whenever I'm in Delhi, तो इंशाल्लाह कि ये कोविड वाला टाइम तो निकल जाएगा very soon, and फिर मिलेंगे सब in person, and I hope many of you will graduate by that time. So do come back. Even if you graduate, come back to listen and interact, and trust me, commerce is a very versatile field, and lots and lots of things to do, because I being in the corporate leadership position, I know a lot of career options for you guys, and make the best out of it and become the best individual. And as Shahid sir said, each one of us have story. Create a story. And when you become 40, 45, you come back and tell your story to youth, wherein they get motivated, and the cycle should go on. So when I was doing my engineering, so my education was sponsored by a trust. I won't lie. So my 4 years was sponsored by a trust because हमारे पास पैसा नहीं था. And today I sponsor that trust. That is what is the circle of life. That is what the beautiful circle of life. So thank you so much. And maza aa gaya. And send me some photos, this screenshot. I love keeping photos wherever I talk. So Sameer, if you can do that honor. And yes, sir, definitely. And Yes, wishing you all the best for your remaining days of
Combrosia, and with all awesome speaker coming in. And yeah, so I'm there on Instagram, on YouTube. You can connect to me on individual. Just message me saying that you were part of Combrosia, so that it becomes easy to me. नहीं तो दिन में 100-200 message आते हैं, to be frank, you know. Message, some stray messages, and so when you say Combrosia, I would be okay, glad ki, okay, you're from that university. So Jai, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you so Thank much. you sir. so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure. Also, thank you so much, everyone, for being an amazing audience and making this online session a success. We hope we were able to deliver the best experience that we could in this online mode. Thank you.